Let's all stand up and continue to walk. Welcome to Tuesday. Today we will also work on balance. If you want to live long and if you want to live healthier, we have to have a good balance in our body. तो हमारा physical balance अच्छा होता है तो mental balance भी अच्छा होता है. Okay? So there is a correlation between physically how well do you balance. You need strength for that, but you also need mind-body coordination, brain-body coordination that improves with your physical balance. So let's all stand up, continue to walk. Today I want you to have a mandatory support. बगल में आपको एक सपोर्ट रखना है, या तो आप चेयर रखेंगे या तो आप वॉल के पास करेंगे, ताकि बाय चांस इफ यू फील अ लिटिल वॉबली, थोड़ा भी ऐसे जैसा फील हो तो तुरंत आप कुछ पकड़ सको. So we'll take care of our safety first. That's our primary request for today. Keep walking. You can do a small jog if you wish to. Little more enthusiasm and a bigger smile. We don't need intense effort, we need sincere effort. देखो हमको इंटेंसिटी बहुत नहीं चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए कि हाँ जितना कर सक रहे हैं उतना तो आप मन लगा के करिए, बाकी सब तो होता रहेगा. Okay, and good job on joining again today. Relax. Let's start with calf raises. Very important exercise. Keep your legs square, feet square. Square मतलब दोनों पैर सीधे होने चाहिए, एकदम ऐसे नहीं. Okay, keep your feet square. Hands on your waist. Lift your heel up and bring it down. We'll do it 20 times. But if you do not like pain in the body, you do only 10. अगर आपको दर्द अच्छा नहीं लगता है तो आप 10 ही बार करो, क्योंकि अभी नहीं पता चलता है वो कल पता चलेगा. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, alternative walk. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Now, what we do as round 2 is keep your feet slightly in a V position. थोड़ा सा बाहर की तरफ angle रखेंगे. Our calf muscles have different areas, so we are targeting different areas. ठीक है? Again, calf raises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, 10. Do less if you don't like pain. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And if you're comfortable with pain, smile more and do 20. Okay, and the last one, this time we keep our feet slightly inwards.
पैरों को अंदर की तरफ मोड़ना है आपको. And then lift up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And relax. Super Brain Yoga. Hold your right ear with the left hand, left ear with the right hand. Breathing in, go down. Breathing out, come up. Okay, breathe in, go down. Breathe out, come up. Now, if you have knee pain, we will do a simple version. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There is one simple rule with breathing. You breathe in, you go towards the gravity. You breathe out, you go away from the gravity. आप सांस लेंगे तो आप ग्रेविटी की तरफ जाएंगे. सांस छोड़ते हुए आप शरीर से ज्यादा ताकत लगा सकते हैं. तो आप ग्रेविटी के से जब दूर आते हैं तो सांस छोड़नी है. And relax. Now you can tap your head. सुपर ब्रेन योगा में 2 स्टेप्स है. एक स्टेप आप ऐसे उठक बैठक करेंगे और दूसरा टेम्पल रीजन पे थोड़ा सा टैप करना है. And again, breathing in, go down. Breathing out, come up. Continue. 1, knee pain है तो मुझे फॉलो करें. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. 11 बार किया. अब टैप करो. बैठक करते हैं उससे कानों को हम फुल करते हैं तो ब्रेन एक्टिवेट होता है और दूसरा हम डायरेक्टली ब्रेन पे टैप करते हैं. एक बार और रिपीट करेंगे. देखो बहुत बढ़िया कर रहे हो. ज्यादा करने की कोशिश नहीं करना है. अगर लग रहा है अच्छा इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, डू माई वर्जन. इट्स एब्सोल्युटली ओके. ओके, कंटिन्यू. 1, 2, 3, do it with a smile. 4, very nice. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. अगर आप पूरा कर रहे हो तो आप ज्यादा मुस्कुराएंगे और अगर दर्द हुआ तो कल बिल्कुल ज्वाइन करना है. If you do exercise, the pain goes away faster. Okay? And now we will do balance. Go against a wall. Keep a chair near you. Make sure that you are mandatorily having a support near you. थोड़ा भी डगमग हुआ तुरंत पकड़ लेना है. ठीक है? So first we will start with a simple stretch which is Tadasana. दोनों हाथ ऊपर, पैर एरिया ऊपर. स्ट्रेच करो अच्छे से ऊपर. Lengthen your spine. Stretch, stretch, stretch. Stay there. Continue to breathe. 1, 2, 3, 4, 5. Bring it down. Relax. Vrikshasana. पैर को या तो आप नीचे रखेंगे या तो ऊपर रखेंगे. तो जैसे आपको ठीक लगे. Take support and take your hand up. Vrikshasana, balance better. Focus your gaze at a single stationary point. Focus your gaze at a single stationary point. अपनी नजर को एक पॉइंट पे टिका दो.
Become aware of the micro movements that are happening in your feet. पैरों में जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, जो सपोर्ट को छोड़ना भी है थोड़ा सा ताकि आप बैलेंस कर पाओ अच्छे से. And bring it down. जो दादा ये हरी दादा. The other side. जो दादा एक्सरसाइज करे, दादा करो पास. Make sure you push your hip so that the body is straight. We don't want this. ऐसे नहीं खड़े होना है, ठीक है? सीधा खड़े होना है. ऊपर दादा ने दादा. वृक्षासन, वृक्ष मतलब पेड़. दादा. दादा. आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपका बैलेंस बहुत अच्छा होगा. नजर एक जगह पे टिका दीजिए. फोकस योर अटेंशन ऑन सिंगल पॉइंट. Try to leave the support. तू करवानो दादा ते. Stay there 5 breaths. વ્યૂ તો અહીંયા આવે તો નાની માટે કરે યોગા. 1 2 એવું નહીં કરવાનું એમ કે ભાઈઓને તારે શીખવાડવાનું એને. 3 4 5. Bring it down. Relax. Now what we do is again bring your कोई भी एक पैर ऊपर उठा लो. We are doing right, you can do left. Now join both your hands if you can or take some support. And now you have to make a infinity figure. Infinity figure. Horizontal 8. धीरे धीरे करेंगे. 1 હલો જો દીદા આવી દીદા મમ્મમ ખાઈ જો. દીદા જો દીદા અપ્પા કરે. દીદા અપ્પા કર. હરુ ટંક બતાવની માસીને ટંક બતાવની તારી ટંક કા છે? હરીની ટંક કા છે? મિહાને બતાવ તારી ટંક કા છે? હરુ ઓ હરી 7 8. Relax with your leg. જો દીદા આવી દીદા on the floor. ઓ દીદા 1 હરી વિહા દીદી આવી 2 3 કારવાર કરે જ કઈ 4 5 6 7 8. The other side. अब आप कुर्सी को ऐसे डगमग डगमग नहीं करेंगे, आप बस ऐसे टर्न हो जाए. ठीक है? You don't have to lift the chair all the time. Make sure you're making a nice 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Relax. With your foot, we make a infinity sign. 1 2 3 4 5 6 7 8. Relax. The other side. By the way, अगर चेयर और आप ऐसे से कर रहे हैं तो चेयर आपका भी थोड़ा एक्सरसाइज हो रहा है. So you can actually do it if you want to. 1 2 3 4 5 6 7 8. Relax. And now stretch your hands out. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. The other side. Ready? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. बहुत बढ़िया.
Sit down. आराम से बैठ जाओ. Let's work on our hip joint a little bit more, because when you balance, you need better stability in your hip joint also. So very simple. Just drop down and drop down. By the way, I hope you remember that when you do a habit with your friend or a family member, your chances of completing it becomes more. So what I want is you talk about what you're doing, about your healthy habits, your friends and family members. It becomes important to stay motivated. ठीक है, तो अपने दोस्तों से, परिवार वालों से आपको सिर्फ बात करना है कि आप क्या कर रहे हो, कि आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने 5 मिनट ज्वाइन किया, आज आपने बैलेंस एक्सरसाइजेस किए, जो आपको लगता है, आप टाइम पे सोना शुरू कर दिए हो, आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आपको ठीक लगे. But talking about your habits helps you to reinforce it in your mind. And relax. Now stretch your right leg out. पूरा पैर सीधा रख सकते हो या थोड़ा सा घुटना मोड़ के रख सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे. I am doing the easy variation. Stretch your hands up. And you can do one hand down or you can do both hands together. जैसे आपको ठीक लगे. क्या टाइम થઈ ગયો? अगर आप पहले you can start from here and then you can slowly stretch. That also works. Or you can just टाइम થઈ ગયો? no problem. Breathe in, stretch your hands up. And breathe out, go down again. Bye bye. करो bye. दीदी ने bye कर. And one more time, breathe in. जय श्री कृष्ण. Breathe out. Anyone who's not allowed to do a forward bend, जो bye this is a करो. forward bend by the way. तो आपको अगर बैक इश्यूज दीदी है तो वही आपको पछी bye forward कर bend दे. नहीं करनी चाहिए. उस केस में आप पैर को एकदम मोड़ के रखेंगे, तो आप बेंड नहीं कर रहे हो फिर. Then you are just stretching. And switch side. If you're not allowed to do forward bend, bend your knee properly. उतना मोड़ के रखोगे तो बहुत बढ़िया है. Breathe in, stretch up. Breathe out. Try to touch the toe. Try to touch the toe. I'm not saying you should mandatorily. You can also touch your ankle, you can touch your knee, whatever suits, whatever feels comfortable. One more time. Breathe in. And breathe out. Again, breathe in. And breathe out. હું છે? Relax. આપો એમ કે आराम से बैठ जाओ. આપો એમ કે આપો Hold મમ્માને your કે leg in આપો. your hand, or you can just hold it here at the ankle and move left to right. બીનો ઓ બીનો હા Mobility of the joint is very important. ઓકે Now your legs do so much work for you. બા એમ કે ભાઈ એમ કે ભાઈ They help you move, walk, run, right? So let's show some love. And how do you do it? You give a nice kiss to your leg, which are I think electric, and then you slowly keep it down. Surprisingly, you have a twin. आपको तो दूसरा भी है, तो अब आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा. Just move. હવે જો બોટલ બતાવ્યો જો માસી. Partiality नहीं कर सकते, so you have to give a kiss to this one as well. And relax. We will do some more asana variation while we do our last બોલો sequence. Breathe in, take your head up. And breathe out. Go to the right side. Right side. So by the way, those of us who have joined later and you have not met Pramod, his name is Pramod, my name is Saurabh, in case you still don't know it. And we then come up, breathe out, go on the left side. Breathe in center, breathe out, right side. So our right would be your left and you can do left also, doesn't matter. अगर आप मिरर में देखते हैं हमें और आप
you would be looking reverse from us. So doesn't matter, you do whichever side first. इतना फर्क नहीं पड़ता है कौन सा साइड पहले करें. एक्सरसाइज कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड lie down on your stomach. पेट के बल लेट जाओ. Hands by your side, chin on the floor. Lift your right leg up. Stretch. And bring it down. Relax. Ardha Shalabhasana, the left side. Stretch up. And let go. Make a fist of your hand. Keep it under your groin. शलभासन, दोनों पैरों को एक साथ उठाना है. अगर उठा पाए तो बढ़िया, नहीं तो ऑल्टरनेटिव ये रहेगा कि हम एक एक करें. So try lifting both your legs up. And if you find it challenging, we'll still do one at a time. Let's count. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And relax. Hands under your shoulders, हाथों को कंधों के नीचे रख ले. Lift your head up, lift your chest up. सिर और छाती को ऊपर उठाए. भुजंगासन. You can take support of your elbows. And in Bhujangasana, mandatory smile bigger. Show your teeth. Feel that happiness. मुस्कुराते हैं तो अपने आप अंदर खुशी आ जाती है. Even if it's a fake smile, it still works. The brain cannot distinguish between a real and a fake smile. So smile bigger and wider. And very slowly bring it down. Relax. Stretch your hands in the front. Now this is one of the hard asanas but most effective as well when it comes to strengthening our back. थोड़ा मुश्किल है but फायदा भी उतना ज़्यादा है पीठ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. अगर स्ट्रेंथ है तो दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएंगे. If you feel the strength, lift your hands and legs up together. And if you feel it is too challenging, let's do one at a time. And we'll count. 10, 9, do as much as possible. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And relax. Become aware of the muscles that we are using. जो मसल्स पे थोड़ा सा प्रेशर या टेंशन फील हो रहा है उनके प्रति सजग हो जाए. Be aware of them. Bend your legs, hold your ankle and lift up. If you cannot hold your ankle, just do the easy variation.
Try keeping or pushing your knees closer to each other. घुटनों को पास में पुश करने की कोशिश करो और सामने देखो या थोड़ा ऊपर देखो. Look forward or try to look up. Maintain, hold it. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And bring it down. मकरासन विश्राम करें. Usually this becomes our favorite आसन. थोड़े दिनों में आपका favorite आसन बन जाएगा. Try keeping your ear on the floor and feel as if you are relaxing in Mother Earth's lap. कान को जमीन पर रख दो और ऐसा अनुभव करो कि आप धरती माँ की गोद में पूरा एकदम तनाव मुक्त होकर ढीला छोड़ते हुए विश्राम कर रहे हैं. Keep that gentle smile on your face and be grateful for all the things that we get from the planet. कल की मुस्कुराहट चेहरे पे बनाए रखिए. Very good. Come on. Let's turn around. ये जो है जिंदगी. पीठ के बल ले जाओ. પછી રમેલા કે પજરે ના દીપેશ કુમાર. Lying on the back. We do every asana twice for once for you to see it. Second time you do it without looking on the screen. पहली बार जब आप देखोगे, पहली बार जब करोगे तो देखने के लिए, दूसरी बार बिना स्क्रीन पे देखे करने की कोशिश करेंगे और याद रखेंगे. अर्ध हलासन. Try to lift your legs up at 90 degrees. और अगर ऑलरेडी याद हो गया हो अभी तक तो बढ़िया है. 2 बार करेंगे हर आसन. फिर भी घुटनों को सीधा रख सकते हैं जितना हो सके. Try keeping your knees straight as much as possible. Slowly bring it down. धीरे से नीचे ले आओ. And we'll do it one more time. Lift up. And this time we do a count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bring your knees closer to the chest. Pavan Muktasan. Massage your lower back. शरीर को दाहिने और बाएं थोड़ा लेकर जाए ऐसे. Keep moving your body left to right. And relax. Pavan Muktasan one more time. This time, try to attempt and take your nose to the knee. Feel the pressure of your thigh on your stomach region. If you have neck issues, you will not lift your neck. गर्दन में तकलीफ हो तो गर्दन ऊपर बिल्कुल ना उठाए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. When it comes to lower body strengthening, bridge pose. Setu Bandhasan is also very important. Heels close to your body, knees pointing to the ceiling. Lift your waist up and pull your stomach in. This helps you strengthen your glutes and the lower back also. Pull your core in, push your glutes up.
The pressure should not be felt in your neck. Pressure गर्दन पे नहीं लगना चाहिए. It should be till the upper back only. Bring it down. And today we do Setu Bandhasan 10 times up and down. Lift up, bring it down. Lift up, bring it down. Round 3, 4. Try doing it without looking at the screen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. And relax. बहुत बढ़िया. Next is Supta Kapotasana. Left ankle on the right thigh. Try bringing your right knee closer to the chest. Stretch. Strength and stretch should be done together to have a better impact. हम थोड़ा स्ट्रेंथनिंग करते हैं, फिर थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं. And relax. The other side. Switch. And relax. One more time. Supta Kapotasana और अर्ध पवन मुक्तासन. अगर ये आपको टफ लगे, चैलेंजिंग लगे, सिर्फ घुटना पास ले आओ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. The other side. Stretch. Five, 4, 3, 2, 1. Let go. Extend your hands 90 degrees to the body. Turn your head to the right. Take your right knee to the left. Spinal twist. Come on, do it on your own. अपने आप से करिए and hold it for 10 counts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Switch to the other side. Turn your head to the left and take your left knee to the right. It is not mandatory that your knee should touch the floor. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका घुटना जमीन को लगना ही चाहिए. जितना हो पा रहा है उतना ट्विस्ट करेंगे. सांस छोड़ते हुए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर लगाना है. With every breath out, slight or slightly extra effort you should put in to twist the bore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let go. अब पूरी तरह विश्राम करिए. पूरा शरीर ढीला छोड़ दे. Let your feet fall apart. दोनों पैरों को साइड में गिरने दे. Take a deep breath in. Fill your body with energy and happiness. And slowly breathe out. Imagine all the stress and tension going out through the breath. Breathe in. Breathe out.
Mentally chant 3 times. I am healthy. I am happy. 3 बार मन में संकल्प ले, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ. Slowly turn to your right side. दाहिनी करवट ले लो और धीरे से उठ के बैठो. Sit comfortable and easy. Whenever you're ready, stretch your hands up. Stretch, 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 stretch. Lengthen your spine. पूरे दिन भर आपका वर्टेब्रा या आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रही होती है, उसको इंटेंशनली स्ट्रेच करो to release all the tension and the stress. Stretch more. And Yoga Mudra. Make a fist of your right hand, hold your right wrist with your left at the back and go down as much as possible. Again, not mandatory to touch the head to the floor. Just drop wherever you can, till wherever you can. शरीर को ढीला छोड़ते रहिए. And slowly come up. धीरे से उठ के बैठ जाओ. अगर आप कर सकते हो तो मांडूकासन करेंगे. वज्रासन में बैठ जाइए. If it's possible for you to do वज्रासन, keep your fist like this. Here, यहाँ पे आपको और आपको आगे की तरफ झुक जाना है अभी. तो इससे क्या होगा, आपके पैनक्रियाज और लिवर पे बढ़िया प्रेशर क्रिएट होगा. इट हेल्प्स यू टू एक्टिवेट द इंटरनल ऑर्गन्स. अगेन नहीं, वज्रासन नहीं तो बैठे बैठे नॉर्मल सुखासन में भी ऐसे हाथ रख के बैठ जाओ. थोड़ा तो प्रेशर क्रिएट हो ही जाता है. बाय बाय और बाय. एंड स्लोली बाय. अब धीरे से सुखासन में आके बैठ जाइए. आई होप कर पाए. थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों को चैलेंजिंग लगा होगा, बट लोअर बॉडी में ना मसल्स थोड़े बड़े होते हैं. वी हैव बिगर मसल्स इन आवर लोअर बॉडी, सो इट इज इंटेंशनली डिजाइन्ड टू बी स्लाइटली चैलेंजिंग. बट इफ यू डिड एवरीथिंग, ओके, make sure you drink lots of water. When I say lots of water, it does not mean 5 or 10 liters. It means 2 to 3 liters. ठीक है, बहुत लोग 2-3 लीटर भी पानी नहीं पीते, इसलिए the terminology comes out as lots of water. But ideally you should be drinking your body weight. जितना आपका वजन है उसका 35 ml के हिसाब से पर kg, ऐसा एक हिसाब होता है जो लगभग 2.5 लीटर से 3 लीटर के आसपास आता है. और of course it depends on which area you stay in. Is it too humid? Is it too hot? Is it too cold? Depending on that, a lot of things vary, but 2 to 3 liters is a general guideline. Okay? So what happens when you drink water? The body pain goes away faster. जल्दी रिकवरी होती है शरीर में. बहुत बार हाइड्रेशन की वजह से, हाइड्रेशन नहीं होता है अगर तो दुखता है, तो ज़्यादा दुखता है. ओके, और अगर फिर भी दुखे तो क्या करेंगे हमको पता है. स्माइल मोर and discuss about your habits. As I said earlier, with your friends and family members, it helps them to stay consistent. It helps you to stay consistent. So motivation का आदान प्रदान होता रहना चाहिए तो बढ़िया रहता है. जैसे हम खाने पीने की बात करते हैं अच्छे से, वैसे ही एक्सरसाइज की भी बात करना शुरू करिए. ओके, कि आज हमने बैलेंस किया, आज मेरे से ये हुआ, मेरे से ये नहीं हुआ, जो भी आपको ठीक लगे.
Let's end with Nadi Shodhan Pranayam. Left hand Chin Mudra, right hand. You can keep thumb on the right nostril, breathe in from the left. Close your left, breathe out from the right. Breathe in from the right. Close your right, breathe out left. Breathe in left. Close the left, breathe out right. Breathe in right. Close the right, breathe out left. 12 more days to go. Type 12 in the chat box as a promise when you're done that you will attend the next 12 days. Thank you so much for joining in. बहुत बढ़िया आप इतना रेगुलरली कर रहे हैं. We'll see you tomorrow for our upper body. कल upper body का एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है? See you tomorrow. Bye bye.